Hello everyone. So before I start, I just want to talk a little bit about Paytm Money Talks and what is Paytm Money Talks और हम यहाँ पे क्या करते हैं. तो Paytm Money Talks is a platform जहाँ पे हम ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं और आपसे बातचीत करवाते हैं जो आपको इन जनरल जिनसे बात करने की मौका ना मिले. फॉर एग्जाम्पल आज के जो होस्ट है हमारे और आज के जो हमारे गेस्ट है वो है मिस्टर अक्षत श्रीवास्तव. ये अपॉर्चुनिटी है आपकी अक्षत से डायरेक्टली बात करने की और एक वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने के लिए. इनके साथ साथ हम ले आते हैं एएमसी दुनिया से इतने ही क्रेडिबल इंसान जो आपको दूसरे साइड की स्टोरी बता सके. आज हमारे साथ उसी रीजन के लिए हैं मिस्टर अनिल घेनानी फ्रॉम डीएसपी एएमसी और वो आपको बताएंगे कि आज के करंट कंटेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं with the existing opportunities to help make better decisions. So Paytm Money Talks is this platform where हम लोग डिस्कस करेंगे और आप हमसे बात करेंगे और हम आपकी बातों के जवाब देंगे. सो दिस इज पेटीएम मनी टॉक्स इन जनरल. और बिफोर आई स्टार्ट मैं हूं मुजम्मिल सैयद और मैं काम करता हूं पेटीएम मनी के लिए जहां पे हम ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं आपके लिए जहां पे आप कुछ सीख सकें, कुछ मैं सीख सकूं, कुछ हम ऐसा बता सकें जो बाहर इन जनरल मिल नहीं रहा है. और हमने रियलाइज किया कि करंट मार्केट टॉपिक्स के ऊपर हमारे पास ऐसा कुछ प्रॉपर्टी थी नहीं जिसमें हम लोगों के साथ एंगेज कर पाए एंड हेंस हमने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे आप मेरे थ्रू लोगों के साथ एंगेज कर सकें. बट बिफोर वी गो फर्दर, हर एपिसोड शुरू करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को थैंक करता हूं और इस बार भी मैं थैंक करना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही रिसेंटली हम लोग 10,000 प्लस फैमिली हो चुके हैं यूट्यूब पे. I know 10,000 doesn't seem like a very big number when we have personalities like Akshat, but this journey has started like a couple of weeks ago, I would say, and we were non-existence of sort, and then we realized कि हाँ हमें YouTube के जरिए बात करनी चाहिए लोगों से बिकॉज YouTube पे बहुत नॉलेज स्प्रेड हो रहा है और इसी नॉलेज में अगर हम लोग वैल्यूबल कंटेंट इकट्ठा करके ले आ सके तो वो बहुत अच्छा होगा. और पिछले कुछ वीक्स में आपने आपका रिएक्शन, आपका सपोर्ट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड वीव गॉटन मोर एंड मोर पीपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज. एंड आज हमारा 10th एपिसोड हो गया है इसी बातों में. योर लव एंड सपोर्ट हैज हेल्प्ड अस रीच सो फार एंड आई अप्रिशिएट कि अगर आप ये सेशन में भी आपके लाइक्स करें, आप कमेंट करें कि आपको क्या चाहिए और हम लोग वैसे चेंजेस करते रहें शो में so that we can serve you better. So, without further ado, let's come back to the main topic, the main agenda of the session, that is Budget 2022. कल अगर आपने कल का सेशन देखा होता तो आपको पता होता कि हमने बजट पे बहुत लंबी बात की थी. बजट क्या होता है, क्यों होता है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, हमने अनंत के साथ डिस्कस किया था. बट आज के सेशन में हम वही कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं. But for those of you who haven't heard us about what budget is, I just want to briefly describe कि budget actually है क्या. कि budget is nothing but allocation of resources by the central government. So इसका पैरेलल आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में भी लगा सकते हैं. जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता घर के ऑब्जेक्टिव्स, घर के गोल्स डिसाइड करते हैं कि हमारे घर में ये 5-6 चीजें होनी चाहिए. उस हिसाब से अपनी रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं कि चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए इतना, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के लिए इतना, बेसिक नेसेसिटीज के लिए इतना, और उसके बेसिस पे उन लोग बजट एलोकेट करते हैं सो दैट सारी चीजों में आपका एक्सपोजर रहे. वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, इंडिया की ग्रोथ मेंटेन करने के लिए, दे डिसाइड टू स्पेंड मनी अक्रॉस सर्टेन सेक्टर्स. और ये सेक्टर्स एवरी ईयर हमें बताते हैं कि कितना पैसा कहाँ एलोकेट हुआ है. उसके बेसिस पे अगर ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो हमारे लाइफ में क्या इम्प्लीकेशन होता है वो हम डिस्कस करके आपको नए अपॉर्चुनिटीज बताने की कोशिश कर रहे हैं. सो आज का एपिसोड इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे बजट 2022 में वी हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट टेक्नोलॉजी और एज जनरल व्यूअर्स itself हम लोग को पता है कि टेक्नोलॉजी इज मूविंग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर. वेब 1.0 ने कुछ अलग इनोवेशन किया था, वेब 2.0 ने कुछ अलग इनोवेशन किया था, वेब 3.0 पे आ गए हम, वेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. इसके साथ साथ 2-3 मेन टेक्नोलॉजी का इंटरसेक्शन हो रहा है विच इज अलाउइंग अस टू क्रिएट इवन मोर न्यू टेक्नोलॉजीज. जैसे आप देख रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
5G, autonomous driving, ये सारी चीजें हमने विजुलाइज कर ली है, और हम ये जानते हैं कि इन सब का इम्पैक्ट कंपनीज के ऊपर होने वाला है, हमारे ग्रोथ पे होने वाला है, हमारे एक्सपीरियंस पे होने वाला है। तो हम आज के एपिसोड में यही डिस्कस करेंगे कि टेक्नोलॉजी और अपॉर्चुनिटीज क्या मिल सकते हैं vis-a-vis द बजट दैट हैज हैपेंड इन इंडिया, एंड ये इनोवेशन को हम लोग कैसे ग्रास्प कर सकते हैं। So now that you know the context of today's event, I want to invite none other than Akshat Srivastav, हमारे शो पे, who is one of the biggest YouTube influencers out there. It would be bad to say that Akshat is just a YouTube influencer. Akshat is more and beyond what he does on YouTube. He has a learning institute where he teaches personal finance. He's a personal coach as well. पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल हेल्थ, सारे, मतलब आप कोई भी एलिमेंट सोचो जहाँ पे एक पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो सकती है, अक्षत हैज बीन देयर एंड हैज बीन टॉकिंग अबाउट इट मोर क्रिटिकली अबाउट फाइनेंस एंड हाउ टू मेक यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर आउट देयर। अक्षत के बारे में जितना बोलो उतना कम है, क्योंकि मैं तो उनका पर्सनल फैन हूँ, क्योंकि मैंने उनसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजीज नहीं सीखी है, मैंने उनसे ये भी सीखा है कि मैंने उनसे वेरियस तरीके सीखे हैं कि अपॉर्चुनिटीज को कैसे व्यू करते हैं और उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं फॉर आवर बेनिफिट। आई हैव लुक्ड एट सर्टेन अपॉर्चुनिटीज इन अ वेरी डिफरेंट लाइट थैंक्स टू Akshat's YouTube channel, and for that I'm really grateful. So जब ये टेक्नोलॉजी वाली बात हुई, and when I spoke about the fact that technology and budget has to come together, I thought there's nobody better than Akshat who should come in and help us talk about it. So inki transparency of knowledge, how he communicates with us, and investment philosophy will allow us to make better informed decisions and help us view new opportunities out there better. So let's welcome Akshat. Akshat, thank you for being a part of the show. Let's get Akshat on board and get this event started. Akshat, आप कैसे हैं? Good. Thank you, Muzammil. I really appreciate the warm introduction. Means a lot. No, definitely. और ये स्क्रिप्ट नहीं करता मैं, मुझे पता है अक्षत की बात करनी है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ। The fact that I've been following you for months now, and some of the things that we try to implement at our end also is inspired by some of what you do. So I'm really thankful for the work that you've been doing to ensure new to market investors in specific are very oblivious in terms of what to do, क्या करना है, क्यों नहीं करना, वगैरह वगैरह, और आपने उनको बहुत सरल बना दिया है, which I'm really appreciative of, and that is why I think ये सेशन मेरे लिए और viewers के लिए बहुत exciting होने वाला है. So I know I can only represent like a part of you. You are much more bigger in terms of who you are, what you do, and the initiatives that you're running out there. It'll be great for you to speak a little bit about who you are for our first time viewers, so that they understand the context of this conversation. Sure. So my professional background has been in consulting, right? So I used to work with different management consulting firms. I did my MBA from INSEAD. उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम सिंगापुर में काम किया. Then from 2018 onwards, I have been running my own ventures, and from 2020 onwards, I had been investing. So far, I have made 7 investments through the VC firm that I run. So that has been my background, right? Apart from YouTubing and being on social media. उसके अलावा मैं एक book लिख रहा हूँ अभी, for which I have already signed a deal. So that book will come out this year, hopefully. And it's on investing and curated minimalism, so which is about a holistic way of living your life. And yeah, so I think these are some of the key things that I'm involved in. नहीं, holistic progress और development के पीछे आपका जो हाथ है, that's बनते रहे, and I'm really happी to know that आपकी book भी बाहर आ रही है. I'm definitely going to read it, and if possible we can distribute your book in one of our shows. अगर वो निकल आती है तो आप मुझे please बताएं. Some of our viewers we can make them answer some questions and get this book where they learn beyond investing as well. But keeping your personal experience and expertise in context, I really wanted to understand कि आपने ये बजट को किस तरीके से देखा. 2022 budget wasn't too mainstream for people, arm salary class of people. This was my personal opinion, but आप being an investor, being somebody who's talking to people all around the place,
what was your opinion on budget 2022? What do you think is the key output of the government? Yeah, actually, दो तीन चीज़ें हैं. So I'll quickly just run down through that. So one is that the entire importance of budget unfortunately has come down, right? Because Okay. उसमें काफ़ी segmentation हो चुका है, right? But if we take a look at it from a face value perspective, then दो तीन मोटी बातें होती हैं, right? So one is that if we take a look at, so दो तरीके के expenditures होते हैं. One is capital expenditure, one is revenue expenditure. So as long as the government keeps on spending money on capital expenditure, capital means कि productive expenditure, कि उन्हें highways बना दिए या roads बना दी या logistics improve कर दिया at the back end. So अपने आप that facilitates growth. So this is growth oriented expenditure. इसका GDP पे भी impact बहुत होता है, right? So number one thing कि capital expenditure बढ़ रहा है Indian budget में over the years. The answer is yes, that the ratio has gone up, which is good news, and this aligns from that perspective. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज जस्ट टू मेंटेन थिंग्स, राइट? आई मीन सैलरीज में जो जा रही है, बाकी सारी चीज़ें. सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, यू नो, इट वी आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट? कि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होगा उसका प्रपोर्शन, सो दैट्स अ गुड न्यूज़, राइट? सो दैट्स पॉइंट वन. Point two is that the budget is majority of the governments के लिए it has been a reactionary instrument, right? In the sense Yes. that because there has been so much hit due to COVID, so many changes, जैसे अभी high inflation चल रहा है economy में, so because of that there are persistent problems at play. जैसे US government ने भी अभी US Feds ने they decided to taper the interest rates, right? बहुत जल्दी. एंड बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था यूएस की इकोनॉमी में. सिमिलरली पूरी दुनिया अभी हाई इन्फ्लेशन के दौर से गुजर रही है एंड इंडिया इज ऑल्सो रिएक्टिंग टू दैट. थर्ड इज दी सप्लाई चेन रिलेटेड इशू कि चाइना की सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई थी. सो हाउ इज इंडिया बिल्डिंग ऑल दैट स्टफ. सो ये सारे बहुत ब्रॉड मैक्रो क्वेश्चंस होते हैं. आई डोंट थिंक इसके बजट का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज बजट इज जस्ट अ रोड मैप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर perspective. One of the most talked about topic on the budget this year was regarding virtual currency taxation. सो दैट वाज द ओनली थिंग. आप बोलोगे तो मैं उसके बारे में भी बोल देता हूँ, लेकिन नेट मोटी मैक्रो बातें यही थी, ये दो तीन. फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना चाहिए बजट को लेके, या बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव बोलने वाली बात है उसमें. Crazy. But considering it was like an okay budget in terms of understanding how the roadmap is there like a thing that you like the most about it? कि आपने बोला ये बढ़िया हो गया बजट में, बाकी सब तो होते रहता है, but this section should have been good. So no, because again the bottom line is कि अभी जो problems जो चल रही हैं that's not an India specific problem जो भी हमारी चल रही है. It's more about a world related problem. कि अब जैसे अभी हाल फिलहाल मुद्दा ये चल रहा है कि Russia is going to sort of get into fights with Ukraine and all that stuff. So उससे related काफ़ी सारा tension चल रहा है, right? And COVID is a world problem, high inflation is a world problem, right? Persistent inflation is a world problem. So ये पूरी जितनी भी world related issues हैं उसमें इंडिया ने already काफ़ी अच्छे से अपने आप को मैनेज करा था कि हमारा डेट टू जीडीपी बहुत ज़्यादा नहीं गया, कुछ खास मेजर नेगेटिव पॉइंट्स नहीं निकल के आए. सो आई डोंट थिंक बजट में ऐसा कुछ भी बोलने लायक वाली जो चीज़ थी कि ये एडिशनल भी कर सकते थे या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. इट्स जस्ट प्रीटी सेंसिबल राइट नाउ कि भाई आपको इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है. सो लाइक एवरी बजट इट वाज अ वेरी रन ऑफ द मिल सॉर्ट ऑफ आंसर, जिसमें कुछ ऐसा बहुत अच्छा भी नहीं था और बहुत खराब भी नहीं था. इट वाज लाइक रन मिडल ऑफ द रोड टाइप ऑफ थिंग. ओके, तो आप जो ये करंट रैली देख रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लाइक सिंस मंडे हैज स्टार्टेड we've seen 500 points every day. This is not because of budget in your favor, like in your opinion. This is not because of whatever has happened out there, is it? Right. No. So honestly, like it's मैंने जैसे अपने YouTube पे भी काफ़ी बार बोला कि according to me it's a sideways moving market. And जब भी इंटरेस्ट रेट को टेपरिंग के रिलेटेड बातें होंगी तभी मार्केट नीचे आएगा and it will keep moving in a range bound manner, and that is precisely what is happening up until now. And there is a very good likelihood कि आगे आने वाले टाइम में भी एक अच्छे खासे लंबे समय तक मार्केट keeps on moving sideways only. सो इस साइडवेज मूवमेंट में होता ये है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो काफ़ी जाएगा, एंड एक बार वो एक पॉइंट को टच करेगा कि 18,500 को टच करा, एंड देन इट स्टार्ट्स कमिंग बैक. सो अगेन वी विल हैव अ डाउनवर्ड रैली देयर. यस. सो while we understand कि इतना कुछ मेजर नहीं था, there was certain things that really excited me in some forms. One was the fact that they're looking at clean energy. Very specifically, they want to ensure that there is certain systems out there that ensure that new things that are coming out are sustainable in one form or the other.
ड्रोन की बात हुई थी, सेमीकंडक्टर की बात हुई थी. This was all led to technology, certain implementation of technology. We also understand that China is going through major crisis right now in the semiconductor businesses and whatnot. In Yep. इसके मद्देनजर रखते हुए, what do you Mhm. think that the budget, um, is the budget aligned to help us make the most of the new technology which is out there? Is it helping? Mhm. Is the budget helping us propel India to become a tech superpower in one form or the other? यार एक्चुअली ये सब चीज़ें चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती है कि अपन वी कैन Mm. ट्राई टू अप्रॉक्सीमेट कि होने क्या वाला है वाली चीज़, लेकिन ऑनेस्टली इसका कुछ डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, राइट? फॉर एग्जांपल इफ वी टेक अ लुक एट सम ऑफ द बिगेस्ट इनोवेशंस दैट हैव हैपेंड इन द लास्ट 2 decades, Yes. Google, right, Amazon, talk about Apple, talk about जी. Meta, Facebook, talk about biggest revolution, right, WhatsApp, right, talk about any major tech revolution that is happening, blockchain, right, जी. cryptocurrencies. जी. I don't think government has played a major role in facilitating any of this. That's one, right, from that perspective. So I don't think कि government का क्या budget रहेगा उससे इन industries को दिशा मिलेगी. I don't think जी. so. सेकेंड की पॉइंट है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज जिनके बारे में आपने बात करी, जैसे कि ईवी हो गया या ग्रीन एनर्जी हो गई या फिर बैटरीज हो गई या ड्रोन्स हो गई, दिस नैरेटिव हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 1.5 decades, राइट? फॉर एग्जांपल the entire story around Suzlon Energy was built around the green and clean energy thing, right? Yes. एंड उसको भी 1 दशक हो चुका है, राइट, जिसमें अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम नॉट सपोर्टिंग इट, the unit economics, the cost semantics around it not becoming positive, and therefore these companies have suffered. So तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर किसी भी तरीके का रेवोल्यूशन आता है तो इट नीड्स टू बी अ सेल्फ सस्टेनिंग काइंड ऑफ अ थिंग, उसमें लोगों को प्रॉफिट दिखना चाहिए, then only they get into these spaces and then they end up disrupting and creating a lot of value in that space. अभी Yes. ग्रीन एनर्जी जैसी चीज में बिकॉज द यूनिट इकोनॉमिक्स आर नॉट पॉजिटिव की कंपनीज आती हैं, बैंकरप्ट हो जाती हैं, इतनी डेट उनको लेनी पड़ती है, राइट? सो उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, राइट, फ्रॉम दैट जी. एंगल कि आप बजट में कितना भी पैसा उसमें लगा लो, अनलेस देर आर लाइक सस्टेनेबल प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज इन दीज इंडस्ट्रीज. जी. गवर्नमेंट सिर्फ एक गाइड कर सकता है, गवर्नमेंट कांट एग्जीक्यूट थिंग्स ऑन योर बिहाफ, राइट? Yes. वो सब्सिडी दे देगा at max, and then technology और product का utilization is dependent on people who or companies who make what they make, right? ऐसे condition में, do you think there are some companies out there which have the potential of Amazon, like what they build? Are there any things that you're excited about happening in India at the moment? नहीं, सो बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2-3 मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बात करनी है और मेजर कंपनीज़ के बारे में बात करनी है, तो आई थिंक द वर्क दैट पॉलीगॉन इज़ डूइंग, द पॉलीगॉन नेटवर्क इज़ डूइंग, दैट्स जी. अमेजिंग, राइट? सो इट्स रैंक्ड लाइक 14th or 15th if I'm not mistaken in terms of cryptocurrencies, right? So they are ramping up the space, the type of funds that they have been able to raise, that is unprecedented for an Indian company, and they have grown at scale in a very fast manner. So that is Yes. one. This is a new age startup, new age company, which is disrupting the world, right, and is representing India, so to say. Second is कि बहुत सारी traditional companies हैं, for example Reliance, it's pivoting, right? So for example अगर आप Reliance के नए acquisitions देखो, so कंपनीज बहुत सारी उन लोगों ने कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, राइट? एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर टेक कंपनीज जो उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो सपोर्ट कर रही हैं रिलायंस को इन टर्म्स ऑफ रेजिंग मनी एंड इन्वेस्टिंग दैट मनी इनटू द इकोसिस्टम, दोज आर ऑल टेक कंपनीज, राइट? बी इट फेसबुक, बी इट गूगल, एक्सेट्रा. सो उससे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, द शिफ्ट इज वेरी क्लियर कि इवन कंपनी और behemoths like Reliance are shifting towards tech. They are seeing the entire game here, right? कि Yes. next decade or two will be built in this space. And वो तो अपना पूरा बिजनेस मॉडल जो बनाया बिजनेस मॉडल है, दे आर लिटरली पिवटिंग इट कम्प्लीटली. सो बहुत कॉम्पिटिशन है, नो डाउट अबाउट दैट. एंड दो एक्सट्रीम्स के बारे में बात करी कि देयर इज लाइक new age player like Polygon which is disrupting, and then there are Yeah. traditional companies that are pivoting, and उसके बीच में पूरा स्पेक्ट्रम है जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं and अपनी अपनी अच्छा काम करके दिखा रहे हैं, राइट? जी. So, considering आप जो कह रहे हो, उससे मुझे ये realize होता है that while there is major technological, revolutions happening in the world, some of them are happening in India, but Yep. most of them are outside, in the form that, like the ones who are on the top and doing major innovations are outside India. So, अगर एक Yep. investor को, मेरे जैसे investor को, if they want to invest in these kind of innovations,
what are the best way of investing in such an opportunity from here? What do you think? Correct. Should people Mhm. go out to invest in international technology companies Mhm. who may set up the base like Amazon ne set kiya for Nika, and Correct. Alibaba did it for some other company. They're Correct. just implementing what they build in one form or the other. So, Mhm. आपका how should one go about investing in these technologies? Sure. Somebody who's new. सो 2-3 चीज़ें हैं, राइट? सो नंबर 1 आपको नैरेटिव्स पिक करने पड़ेंगे। नैरेटिव्स इन द सेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस एरिया ऑफ टेक में ग्रोथ आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट कुड बी समथिंग लाइक डीफाई, राइट? सो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूनिस्वैप का एग्ज़ाम्पल लो, व्हिच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डीफाई प्रोटोकॉल्स, एट Mm, इट्स पीक उसका वैल्यूएशन वाज़ 22 बिलियन, राइट? एंड mm, बायजूस का वैल्यूएशन राइट नाउ इज़ लाइक 21 बिलियन, राइट? सो एंड yeah. 1.5 साल पहले लिस्टिंग हुई थी यूनिस्वैप की, राइट, ऑन आईसीओज। सो आप देख सकते हो कि द स्पीड एट विच दैट नैरेटिव इज पिकिंग अप, राइट? सो दैट्स वन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। इंडिया में compete नहीं कर रही हैं कंपनीज इन द डीफाई स्पेस। Yeah. सेम गोज फॉर अगर आप कोई भी नैरेटिव पिक करो जो भी चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या Mm, फिर अगर आप कोई डिफरेंट नैरेटिव पढ़ सकते हो, जैसे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, आरपीए। सो mm, आरपीए में कंपनीज, देयर आर लाइक कंपनीज लाइक यूआईपाथ व्हिच आर वेरी बिग, राइट, व्हिच आर yes. मोनोपोलीज। अनफॉर्चुनेटली Mm, इंडिया में कोई established कंपनी नहीं है which is not even coming close, right, to yeah. companies UiPath. Coinbase हो गया, right? इंडिया में भी क्रिप्टो को रिलेटेड रेगुलेशन नहीं है, right? The Mm, changes are not working hand in hand with the government to define that or redefine that space. So from yeah. that particular perspective, अभी इंडिया में opportunities नहीं है where the next leg of Google or Amazon will come from India, right? That is a fact, right? Yeah. Now अब कितनी जल्दी वो चेंज हो जाता है, बिकॉज टेक अपने आप में एक बहुत वॉलेटाइल सी स्पेस होती है, बहुत जल्दी इसमें चेंजेस आते हैं। सो ऑफकोर्स इंडिया में इसमें भी आ सकती है, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा नज़र नहीं आता, राइट, फ्रॉम दैट एंगल Mm, कि इंडिया से निकलेंगी इस तरीके की कंपनीज इन द वेरी नियर शॉर्ट टर्म, राइट? सो मैं ये बोलूँगा इस चीज़ पे। एंड अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है इस तरीके के नैरेटिव्स में, तो नंबर 1 पिक अ नैरेटिव, नंबर 2 लुक फॉर mm, कंपनीज जो यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है। तो मेजॉरिटी ऑफ दीज टेक रिलेटेड प्लेज आर इन द यूएस राइट नाउ। mm. सो अगर आपको इस तरीके की, इफ यू हैव टू फिगर आउट द नेक्स्ट गूगल, अमेजॉन एक्सेट्रा, सो आपको अनफॉर्चुनेटली इंडिया से बाहर ही जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो बात ट्रू है that we're reaching there and we've not reached there enough, and capital plays a very important role. Capital in the form of R&D, which these companies, bigger companies have a lot, and they've been investing over a period of time. Jैसे Facebook has invested so much money behind building what they built. Meta is unprecedented. I don't think anybody has that much money. But one thing that I want to take back from what you were talking through narratives, आपने डिजिटल करेंसी, डिजिटल all of these are fundamentally new, but there are industries such as आप बता रहे थे drones एक हो गया, biotech is coming, like there are a lot of work happening on gene technology, green energy, and use of AI in terms of different decision making. IoT will open up a lot of things for us when one electronic will talk to another electronic. I don't know what will happen when everything's integrated and everything's working on 5G. So ये narratives में which are very traditional at the moment, away from digital currencies, which are some of the narratives that you are a little bit bullish about? Yeah, so I'm quite bullish about the biotech revolution that is happening in the space. For example, जैसे CRISPR टेक्नोलॉजी को अगर अपन थोड़ा सा स्टडी करें, तो इट्स वेरी एविडेंट कि जीन एडिटिंग की ज़रूरत है दुनिया में, बिकॉज दैट्स अ स्टिकी प्रोडक्ट, राइट? फॉर एग्जांपल अगर लोगों को दुनिया में डायबिटीज़ होती है, एंड इफ योर जीन्स कैन बी एडिटेड टू प्रिवेंट दैट डिजीज, पीपल आर गोइंग Yeah, टू पे अ लॉट ऑफ मनी for that to make happen, right? And there are yes. companies that are already working on this space. So this is a sticky product, this is needed. Technology is not going to disrupt this per se, right? So इसमें market है, लेकिन for example drone का I am not sure, right? Because there might be a better technology than drone. I don't necessarily need to buy a drone, right, to sort of make two in my business. So that Yeah. might or might not be required. So yes, there are technologies which I'm very bullish about. For example, जैसे gene editing technology हो गया, I'm very very bullish about that. I think healthcare एक ऐसे place पे पहुंच चुका है, given the innovation that is happening, given the money that is coming into this space, कि ये space तो बहुत अच्छी जानी चाहिए, right? And on the flip side, there are technologies which look very promising, but they will not
fructify, right? And they will not reach to anything. They might not reach to anything fruitful as we are imagining it to be. Yeah. अब मैं एक चीज ये भी देख रहा था कि सेबी का एक नया रेगुलेशन आया which is now restricting AMCs to invest a particular not more than a particular percent of their funds into global funds in one form or the other outside India. अगर if major innovation is happening outside India and these are places that we can harp on, and if SEBI puts a cap on it, what is your view on it? Like, is it beneficial for us in some form that I don't see clearly? या फिर क्या angle हो रहा है इसके पीछे? What is the reason behind doing that? This is probably, I'm not the right person to answer this, but I'll still make an attempt to, right? So for example, जो mutual fund industry होती है, that is geared towards retail investors, and retail investors are हम थोड़ा advantage ले सकते हैं, right? But mutual fund industry is a protective industry, right? कि वो आपको protect करके चलेगी वाली चीज़ है, right? So neither you are not going to make insane money per se, लेकिन retail investors के पास और कोई option भी नहीं होता. A better way is to invest through hedge funds, right? जिनके ऊपर कोई limitation नहीं होती, right? So they can go and invest your money wherever. And जितने भी billionaires होते हैं, they invest their money through hedge funds, not mutual funds per se. लेकिन as retail investors हमारे पास कोई other option भी नहीं है, right? हमें इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा, right? And जो भी SEBI की guidelines है उसके अंतर्गत ही हमें अपने moves लेने पड़ेंगे, right? So this is what I would say, but I'm not sure, right? I mean, how that impacts per se. No worries. अभी इसके चलते हुए we have some funds coming out in the market which are allowing us to make the most of what innovative technologies that are out there. One of such is the topic is the topic today, which is DSP का Global Innovation Fund. Have you heard about it? What are your thoughts if you have? What do you think? Is it like a good proposition to have a look at as a retail investor here in India? राइट सो आई थिंक दो तीन पॉइंट्स हैं इसमें. So, सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक पिकिंग करोगे यूएस में या फिर किसी और दूसरी कंट्री में, सो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज नंबर वन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता. नंबर टू टेक्नोलॉजी में चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं, राइट? सो एंड नंबर थ्री हम उस मार्केट से बहुत ज़्यादा अवेयर भी नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में तो आप बैठ के न्यूज़ फॉलो कर सकते हो या जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो आपको सुनाई दे ही जाते हैं, राइट? लेकिन यूएस के स्टॉक मार्केट में इफ यू आर नॉट एक्टिवली tracking it, then direct equity investment might not be the best bet, right? So उस सेंस में इस तरीके के जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं उसके थ्रू इट्स अ स्लाइटली सेफर राउट टू मेक दीज इन्वेस्टमेंट्स डेफिनेटली. Okay. So to understand a little bit more about कि Global Innovation Fund actually help कैसे कर रहा है, because there are a lot of themes that are coinciding with this fund, and I had the opportunity to go through all that it has to offer, and it turns out that most of the themes that we spoke about are somehow associated in this fund in a way that allows people to have exposure to companies that it is मतलब in general आपके पास नहीं होता. So इसके साथ साथ I just want to, before we call on to the next guest of our show, I just want to ask a question to all the viewers right now, that what are the top opportunities that you're bullish on, when it comes to technology and the themes like Akshat spoke about. What are the top themes, top tech opportunities, top exploratory ideas that you think will have a major impact on how we live and operate in the next 10 years? I know 10 years कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है when it comes to technology, because अगर हम 15 साल पीछे जाएं तो लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं था. आज हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, and it has impacted a lot of things in a lot of ways. People just don't call right now. Internet भी आ गया है, things merge onto it. So next 10 years, it's a very critical question. I would request all the viewers to maybe type in your answers, try to understand. We'll pick a very innovative answer or one that interests us a lot and maybe send you a book. And if Akshat की book आ जाती है तो हम आपको अक्षत की book भेजेंगे, which is due coming out, but something based to investing, and we would really want to know what are the top things that as a retail investor आप बहुत interested हो. So Akshat, now that we understand कि आपका budget का opinion क्या है, आपका tech का opinion क्या है in general, I just wanted to call in Anil. Anil is our next superstar of the show, which is Anil के बारे में I wanted to tell a couple of things that as Paytm Money we were associated with DSP a lot, and somebody at DSP called Manish helped me meet Anil, and then I got to know the big personality he is. He spent more than 19 years at DSP.
shows the kind of commitment he has towards the kind of products that he's been launching. He's the head of passive investments, all of it at DSP. But more than that, he's been a CEO for the pension fund as well at DSP. He, along with all the things that he does, is a part of the CFA Institute. He has been, spearheading a lot of things through the CFA program in India, and has been behind building one of the most innovative products that DSP launches with. अगर आप देखोगे DSP के funds भी, they are little different from the ones that come out in the market. The last fund that they launched was equal weighted fund, which was fundamentally talking about how निफ्टी में मार्केट वेट के हिसाब से आपको ETF वो करते हैं, तो इन्होंने बोला इक्वल वेटेड, सबको 2% देंगे और एक फंड बना देंगे. So these are the kind of innovative solutions that Anil and his team comes up with, and I got the opportunity to meet with him, and I thought कि ये सेशन के लिए अनिल को बुलाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा. तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स कॉल अनिल. अनिल, हाउ यू बीन? आप कैसे हो? Thank you very much, Muzammil. बहुत बढ़िया. Good evening, friends. Thank you very much. Muzammil, Akshat, मैं आपका discussion सुन रहा था. Very engaging discussion, and I'm very glad to be a part of this. No, we're very happy to have you on board as well. And I know, आपके 20 years के career को मैंने ऐसे कुछ 10 second में consolidate कर लिया. I would really want you to spend a little time talking to our viewers about yourself and yourself alone, how and what you do at DSP that makes it very lucrative for retail investors like us to look at the opportunities that you build. So over to you, Anil, and we'll get back to you on the section after that. No, thanks, Muzammil. You are very kind to outline. I'll take not more than maybe just a minute to describe. Friends, मेरा नाम अनिल गिलानी है, जैसे मुज़म्मिल ने बताया. He's been very kind in his words. I've been in the capital markets for almost 2 decades now. As a quick backdrop, I am a chartered accountant, CA by profession earlier, working into auditing, taxation, etc. Then I pivoted into a career in asset management and joined mutual fund industry sometime during 2003. And I've been one of the main things which has been driving my daily job or my passion for coming to work every day is that in some form or fashion कोई अलग-अलग तरीके से कैसे हम जो निवेशकों को benefit कर सके, how we can help the investors in terms of achieving their financial goals. So it's not about creating the most innovative product or delivering the best outperformance over other competitors, but more so it is about how each one of us who are listening to this discussion, or each one of us who are in our vicinity, how we help them to achieve their financial goals and objectives. That is the key. And over there, in fact, the team like at Paytm Money or large content creators and influencers like Akshat, these are all very great initiatives which come on the picture. So really, I'm very happy to be a part of this discussion. Crazy. And we've been trying to understand the different kind of innovations that DSP brings, and it's only astonishing to know कि ये सब भी हो सकता था, कोई कर नहीं रहा था, and now when you do it, it becomes हाँ ये कर रहे हैं तो हम भी कर लें. So some of the funds that I have invested personally are really exciting opportunities to have a look at. And while we're at it, and while we're discussing technology, the implication of the budget and whatnot, I would want you to spend a little time, speak about the new fund that has come out with DSP, which is the DSP Global Innovation Fund. Why do you think it clicks with the narrative that is out there? The technology narrative that we're in general speaking about, the themes and opportunities that are generally people bullish about. How is it taking care of all of that? So we'll give you a couple of minutes, maybe take us through a couple of slides and explain us what makes DSP Global Innovation Fund unique and a good opportunity for everyone to invest. Sure. Thank you very much, Muzammil. And to be very honest, earlier I was just listening in the discussion about the budget, and in fact Akshat also mentioned 1 or 2 points about some technology enablers, some of the way in which there has been a focus on green energy and how technology can help in many things. So I felt that a lot of those things, in fact, are culminating and becoming a part of this DSP Global Innovation FOF or Fund of Fund. So it's very good, and मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं काफी चीजें उनको इससे relate कर पाऊंगा immediately.
तो फ्रेंड्स फर्स्ट सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो एक प्रोडक्ट है ये एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग इनोवेशन प्रोडक्ट है। अगर अपन इसको देखें तो ये फंड में 3 मेन पिलर्स है जो जिसमें ये पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी कॉल इज डोमिनेटर्स, देन वी हैव इनेबलर्स एंड यंग डिस्ट्रप्टर्स। नाउ व्हाट वी मीन बाय डोमिनेटर्स कि जो एक इंडस्ट्री सेगमेंट में ऑलरेडी लीडर्स उसको डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे कि कुछ कुछ नेम जो आप और मैं हर दिन अपने डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, नो डाउट नथिंग न्यू, बट जस्ट आई एम शेयरिंग एज एग्जांपल कि आपका फोन कौन सा है, तो बोलेंगे बहुत लोग बोलेंगे भी हाँ मेरा एप्पल है। या आप शाम को आपके एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, तो बोले हाँ मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ। या तो आपको अभी कुछ घर पे ऑर्डर करना है, आप अमेजन ऑर्डर करते हैं। सो सम ऑफ दीज नेम्स, these are not any stock examples or stock recommendation, just as a company, like these are dominators, you know, who are involved in their industry segment and who are dominating that space. For example, Tesla, Adobe, Netflix. Okay, now this is one of the important pillar of our this DSP Global Innovation Fund, where your investment will be made. Second pillar or second aspect of this is enablers. तो जैसे आपने देखा ये डोमिनेटर्स हो गए, ये अमेजोन है, ओके, ये नेटफ्लिक्स है। नाउ उनको ड्राइव कौन करता है? टेक्नोलॉजी वगैरह है, नो डाउट, उसका प्लेटफॉर्म सुपर है, नो डाउट, बट वो प्लेटफॉर्म के पीछे कौन है, क्या है? तो आई टेक दैट एग्जांपल इन द सेकंड पार्ट इन बिटवीन इन दिस स्लाइड व्हिच यू कैन सी। वी हैव कंपनीज लाइक फॉर एग्जांपल EPAM, राइट? EPAM या EPAM, नाउ दिस कंपनी इज one of the leaders in coding. It develops various codes which are enablers for, let's say, some of these dominators. Or let's say if we look at this company like Intuit, they are into the chips, etc. You know, or the first on the left hand side, Nvidia again, that is involved in creating the semiconductor and chips related. So some of these entities, or let's say for example Trimble, I want to just highlight that, you know, they are into a lot of automation in agri side, construction, infrastructure related thing, you know, how it helps in automation on that. And here I'll just take a minute to connect yesterday's budget speech. And you know, there was a very important focus which was given on how drones will be used in agri related and you know, for simple form, जैसे कि एग्रीकल्चर एग्री साइड में अपन ये देखते हैं कि वो पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे होता है, तो मैन्युअली इट्स पीपल गो, देयर आर मशीन्स ऑफ कोर्स, बट नाउ देयर विल बी ड्रोन्स व्हिच विल प्रोबब्ली बी डूइंग दैट। और लेट्स से फॉर जियो टैगिंग सम ऑफ द लैंड पार्सल्स, व्हाट्स हैपनिंग वेयर। सो दीज आर न्यू evolving technologies, not just you know, which we are reading and observing elsewhere, but even in a very big way getting implemented in Indian markets as well. तो ये एक तरह से अपना सेकंड पिलर हो जाता है कि हाँ भाई ये डोमिनेटर्स है, ये उनके इनेबलर्स है। और थर्ड पिलर which is the young disruptors, means these dominators which were let's say 10 years 15 years back disruptors. मुझे आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि 10 साल में क्या होने वाला है, 15 साल में, जैसे आपका जो लाइव क्विज था for the our viewers who can participate in the live quiz, वो हिसाब से आज 10 साल पहले कोई सोच भी सकता था शायद कि हर एक जन के हाथ में, आपने एक फोन बोला, मैं तो बोलता हूँ majority people nowadays many of them have multiple phones also, लोग कि हाँ ये मेरा पर्सनल फोन है, ये ऑफिस का फोन है, इसमें सिर्फ मैं YouTube वगैरह, Paytm Money के टॉक्स वगैरह देखता हूँ, इसमें मेरे फोन कॉल होते हैं, राइट? So some of these companies 10 years 15 years back were young disruptors, so today some of these could be in the portfolio which can become dominators of the future. तो जैसे एग्जांपल कुछ ये बताता हूँ, जैसे Zoom हो गया, everybody in this last 2 years has extensively used Zoom, right? They are a young disruptor in the way in which communication is being done, right? or let's say for example Roku हो गया, तो friends many of us अपने शायद Roku के बारे में यूज भी किया होगा Roku, और सुना होगा डेफिनेटली, जो जैसे एक फायर स्टिक टाइप होता है, ना Roku का एक खुद का एक स्टिक होता था, मतलब you know स्टिक आता है which is like a which can power your you know, digital feeds, etc. or some of the entities which are into you know, virtual services or into gaming as a segment. तो कुछ तरह से एक तरह से अपन कहें ना कि ये जो डोमिनेटर्स जब भी वो यंगर हो, मतलब catch them young, that's the main entity, the main mantra if you look at it from this aspect, okay, which can deliver very good positive returns. So in nutshell, I mean, this one brief summary slide itself articulates and explains what today you and I want to do with our money for the future, what you and I feel will be drivers of, for all you know, our daily lives 5 years later, you know, like we will be seeing it now today, how we are thinking Amazon
एप्पल नेटफ्लिक्स के सिवा अपनी डेली लाइफ नहीं चलती है, वैसे मे बी इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू से कि दीज आर द डिसरप्टर्स एंड एनेबलर्स एंड डोमिनेटर्स विदाउट व्हिच वी कांट फंक्शन. तो why don't we start with investing into these companies and gain from the potential of rise over there, है ना. तो जो कंपनीज अपन हर दिन में यूज कर सकते हैं या जो अपनी लाइफ को इम्पैक्ट करे उसमें अपन निवेश करें, राइट. नाउ इफ यू जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज, आई विल आर्टिकुलेट के ये चीज करना बहुत मुश्किल है. कहना बहुत आसान है, करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क भी होता है. टुडे वी आर थिंकिंग कि these are the young disruptors. Well, who knows, when there will be so many companies who will fail. Like I just give you example, today we are all used to saying कि अरे बॉस आज अपन कहते हैं ना कि कुछ सर्च करना है तो अपन सर्च करना नहीं बोलते, अपन बोलते हैं अच्छा उसको गूगल कर लो. लाइक ऐसे अपन बोलते हैं ना, मतलब सॉरी मुजम्मिल साथ में इसके लिए मैं खास वो एग्जांपल बताता, अपन बोलते हैं ना कि हाँ भाई इसको कुछ पैसा भेजना है तो अपन ऐसे नहीं बोलते, अपन बोलते पेटीएम कर लो, मतलब जस्ट एग्जांपल. या कुछ लर्न करना है तो अपन बोलते हैं हाँ पेटीएम टॉक्स देख लो. So like that today in search engine, though it's like Google Karlo, but before that, friends, if you remember 10-15 years back, there were many such companies. There was a Yahoo, there was a Infosys. Some of these names I don't even remember myself before we started making this presentation. But today, successful entity is one, but there are many small who could be flops or which could struggle. Email में भी आप देखो तो सबसे पहले मतलब everybody remembers, right? सबसे पहला email कौन सा था? मेरा तो वो हॉटमेल होता था एक जमाने में, हॉटमेल. एंड पीपल इन द यूएस दे यूज्ड टू AOL, राइट. आज याहू है, रेडिफमेल है, फाइन दे आर देयर, बट स्टिल लाइक सक्सेसफुल इज वेरी डिफिकल्ट. Orkut, everybody knows it was in social media and trending recently, lot of news around it. But now today, like not everybody has been able to become successful in social media. Likewise in mobile phones, some of the companies today not even there in existence. So innovation is not easy. So we need to have a good diversification in our portfolio, right? So ये जो तीन पिलर्स जो अपन ने सोचे कि जो हमारे डोमिनेटर्स, एनेबलर्स एंड यंग डिसरप्टर्स है, उसमें बहुत ही अच्छे डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो हाउ वी ओवरकम दिस हर्डल कि भाई देयर कुड बी मेनी फेलियर्स, सो वी ओवरकम इट बाय well diversifying across different sectors and within that the individual stocks in their sectors. Now I'll just conclude it with one more last slide and then we'll come back to the discussion, Muzammil ji and Ankur. So if you just move to the next page, where we can just highlight how we will do this, कि we are trying to do a very good balancing factor. कि जैसे कुछ फंड्स जो है जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड होंगे जो ये पर्टिकुलर कुछ न्यू एज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, और कुछ फंड्स जो है जो एक पैसिव वे में नैस्डैक में इन्वेस्ट करेंगे, आई शेयर्स सेमीकंडक्टर ETF उसमें मैनेज करेंगे, और उस तरह से एक अच्छा बैलेंस बना रहेगा जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज अपने को एलोकेशन में मिल जाए. जैसे नैस्डैक ETF है तो उसमें लगभग 100 कंपनीज है, आई शेयर सेमीकंडक्टर में लगभग 50 कंपनीज है. एंड आई विल कनेक्ट दिस, आई टेक द अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स. मुजाम्मिल जी आपने जो बात बताई थी, अक्षत जी से आपने पूछा था कि सेबी का जो अभी करंट एक रेगुलेशन है जिसकी वजह से कुछ लिमिट्स ब्लॉक हो रही है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो ये फंड से या तो म्यूचुअल फंड में किसी भी वे में पैसा जो बाहर निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट गोइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, देयर इज अ अपर कैप ऑफ 7 billion, यू सेड वेरी राइटली, फॉर इन्वेस्टमेंट इन ऑल these एक्टिव फंड्स और इन स्टॉक्स डायरेक्टली, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, व्हाटएवर. प्लस देयर इज अ सेपरेट लिमिट ऑफ अप टू $1 billion which is for investing into ETFs. So you are right that currently at an industry level there is a capping which is being done because the limit is very close to being hit, which is only for these active funds and securities. But for ETFs, which is a 1 billion limit, there is a good enough space available. So for now, as we start over this fund in the NFO period, whatever amounts will be allocated will be going into only these two ETFs which are mentioned in the bottom over here. So to that extent, for the first couple of investments which will be done, it will be only these two ETFs which are very well diversified. One is Nasdaq, so about 105 securities, and the semiconductor ETF again about 50-60 stocks. So well diversified portfolios across these kind of segments which can benefit the investor from the innovation as a theme on these three pillars broadly. No, very nice. I would like to throw it back to you. हाँ जी मुजाम्मिल जी, तो जस्ट आई वुड लाइक टू कम बैक टू यू कि जिस हिसाब से ये आपने
बहुत ही अच्छे से बजट को लिंक किया आपने टेक्नोलॉजी से, ताकि आज जो आपके व्यूअर्स है और जो आपको आज सुन रहे हैं उनको क्लियर होना चाहिए कि बॉस ये सब तो हो गया, ठीक है, ज्ञान मिल गया, अभी मैं क्या करूं उससे, मैं मेरा इन्वेस्टमेंट को कैसे ट्वीक करूं, और हाउ शुड आई इन्वेस्ट इन माय मनी, व्हाट शुड आई डू, व्हाट्स इन इट फॉर मी. सो आई थिंक गुड वे टू summarize it, and back to you for any questions or any further discussion. I had like one observation that I had, because I had gone through the fund PPT as well. So आपका जो distribution between disruptors, team, can you put on the first slide please? तो मैं आपको एक very specific चीज बताता हूँ कि आपका जो distribution है, dominators, enablers और young disruptors, इसको देख के मुझे large cap, mid cap और small cap की याद आ गई in a very different way. You know that you're ensuring कि dominators के साथ आपका वो base हो के स्ट्रेंथ और यू नो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आप मेंटेन कर सकते हो. एनेबलर्स आर एक्चुअली लुकिंग एट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड डिसरप्टर्स आर बेसिकली ट्राइंग टू बिल्ड न्यू अपॉर्चुनिटीज. सो ये तीन चक्कर में यू आर एक्चुअली एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इररिस्पेक्टिव नहीं होता. दूसरा एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये था कि द फैक्ट दैट यू हैव पैसिव फंड्स being a part of it, that means you're mitigating risk on a larger spectrum that allows you to take care of the risk that you spoke about. जैसे आपके एक स्लाइड में था कि सर्च इंजन में अभी हम गूगल बोलते हैं, बट एक टाइम था in the 90s and the early 2000s that maybe a lot of people were doing Yahoo, a lot of people were using Bing and you know all the other things that were out there, but they're non-existent today. So in that context, when you have a spread of passive funds, it actually allows people to mitigate risk in various ways, is what I thought. इसके चलते हुए there is this question. The reason why I wanted to interrupt you in a way was there is this one question which I thought which was very relevant that came in the comment section. That question is coming from a man called as Lokesh, and he's been very actively messaging us. So he says, I have Motilal Oswal S&P 500 and Nasdaq 100 with only 0.2% of expense ratio. ये fund का expense ratio is close to about 1.35. Why should I invest in like हमने अपना explanation तो दे दिया, but I think it is very specific to 1.35% क्यों है? Why is it not 0.2? And what goes behind building a complicated fund like this and making it simple to viewers and people who are interested? नहीं, सुपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हाँ जी, मैं बता देता हूँ. दो चीज होती है इसमें. ये जो एक्सपेंस रेशियो डिस्क्लोज होता है ना साहब, उसमें क्या है कि वन इज द एक्सपेंस रेशियो ऑफ द अंडरलाइंग फंड वेयर वी इन्वेस्ट इनटू. ओके, द सेकंड एक्सपेंस इज द एक्सपेंस ऑफ द आवर फंड. सो फॉर एग्जांपल, you know, let's say when we are investing into the underlying fund, let's say the iShares semiconductor fund or the BGF technology fund, or there's a blue box fund, there's a Morgan Stanley Insights fund, there will be some cost which that fund is levying, right? आप आज कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश करो, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन्वेस्ट करो या तो डीएसपी, एक फंड जो है डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड, वो उस फंड में निवेश करेगा, उसको इनडायरेक्टली उसका खर्चा लगता है. तो हम जो डिस्क्लोज कर रहे हैं वो टोटल कंसोलिडेटेड खर्चा जो आपके हाथ में लग रहा है वो डिस्क्लोज कर रहे हैं. तो कुछ जो अंडरलाइंग फंड के जो टीआर होते हैं, एक्सपेंस रेशियो होते हैं, उसके ऊपर ये आपको खर्चा बैठता है. नाउ व्हाट हैपेंस कि देयर इज आल्सो अ सेबी रिस्ट्रिक्शन कि हाउ मच मनी एज अ टोटल एक्सपेंस रेशियो कैन अ फंड ऑफ फंड चार्ज. तो वेरी सिंपली पुट, वो क्या बोलता है कि जो भी अंडरलाइंग फंड का एक्सपेंस है उससे 2 टाइम्स ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हो. तो मान लीजिए अभी अंडरलाइंग फंड इज लेट्स से नास्डैक, सो और उसका खर्चा लेट्स से फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, जस्ट एक रफ मैं बता रहा हूं, सपोज 20 बेसिस पॉइंट है, तो आप इंडिया का जो फंड लेवल है उसमें आप एट द मैक्सिमम 40 बेसिस पॉइंट चार्ज कर सकते हैं, यू नो. तो अलग उसका एक बहुत फॉर्मूला ड्रिवन अप्रोच होता है. एंड अगेन व्हाट आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि स्ट्रक्चरली इन दिस फंड, ग्लोबल इनोवेशन फंड, व्हाट वी आर ऑफरिंग इज स्लाइटली डिफरेंट. क्योंकि जैसे आपने कहा मुजम्मिल जी और पहले अक्षत जी ने बताया कि इसमें थोड़ा ब्रॉडर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, नॉट जस्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल नास्डैक, S&P 500 एक ब्रॉड बेस हो गया. इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट आप बोलो कि हाँ भाई मैं पूरे मार्केट को बाय कर रहा हूँ, मींस यू नो यू आर बाइंग 500 कंपनीज ऑफ द एंटायर मार्केट. नाउ देन देयर इज अ लेट्स से नास्डैक व्हिच इज फॉर एग्जांपल just specific a segment of the you know tech enabled companies, you know, where we'll find all these FANGs and some of the newer age companies or
non-financial companies, sorry, not only technology. Structurally, Nasdaq में जो भी listing होती है, they are non-financial companies, you know. तो एक हद तक कि भाई जो ये 3 pillars के अंदर अपना invest हो रहा है, which is getting done. That is how we are trying to structure it with the underlying cost of the fund, मतलब, you know. तो Yes. No, I think it's much more complicated than getting a passive fund out there कि जहाँ आपने index में invest कर लिया and it's distributed how it is. We're looking at very complicated passive funds which are उसके अंदर भी हम लोग layer कर रहे हैं 30% of this, 40% of that. It requires a lot of active management is what I felt कि Apple is not the cheapest phone out there. But maybe one of the best phones out there for people who want to use. So there are certain opportunities. I feel the certain opportunities come at certain cost, which we're willing to pay, and what we're trying to ensure is to mitigate it across everything that we're trying to do. So with this section, I just wanted to say that my thoughts about the fund are very clear. I think we should also go back to Akshat and get to the most exciting part of the show, in which we're actually going to get Akshat and you one-on-one on some of the key questions that are out there in the retail investors' mind. Akshat speaks to so many people on the go that he may know more about what retail investors are thinking on a day-to-day basis, and we should use this opportunity to get some of these questions answered by the man himself and move it forward. So Akshat, all over to you. Let's ask some difficult questions to Anil, and all the doubts are clear for anybody who's watching this video. Yes, absolutely. I've been watching many videos and many engagements, and yes, very much look forward. A lot of difficult questions will come, I'm sure. Thanks, Anil. So, Anil, basically, if I'm a retail investor trying to invest via this fund, then one of my key questions would be that, how would you track the changes in technology, right? And how would you rebalance the fund? Because the pace at which the technology moves, that itself is very fast. So is there any specific criteria that you are looking at and what's the philosophy behind it? Sure. No, that's a very good question. See, I'll tell you what we have captured in our investment management framework as an ongoing basis is that we will not do a tinkering on a day-to-day basis. We will have a 6-monthly review, which will have an in-depth meeting with each of the portfolio manager of the underlying funds and analyze everything that's happening. As far as everything is going fine, there is no structural big change into the investment strategy or investment underlying investment teams thinking. We will not touch the asset allocation on a regular basis. Once in a year, we will rebalance and try to bring back to the indicative ratios what we start with, as we just saw in the slide. But otherwise, we will not keep doing tinkering along, because नहीं तो what will happen, Akshat ji, कि एक तरह से active management हो रहा है, उसके ऊपर हम एक और layer active management का incorporate कर देवे. We don't want to have multiple layer of active over active. So yes, we have done our homework at the back end and then come up with this broad distribution. Now we will stick to it. At the end of every year, we'll recalibrate the holdings back to that level. Understood. And in terms of every 6 months, regular review will keep happening. So if there's anything drastically changing, yes, then it will want for a change. But otherwise, we will not. Understood. So, and in terms of rebalancing, are you taking an approach where if there are certain narrative-based changes in terms of tech, then you are going to rebalance it. So what's the rebalancing philosophy per se, right? I mean, what are some of the drivers that you will look at in terms of rebalancing the portfolio? So structurally, how we have tried to allocate is that we wanted to do a good blend between point number 1, active management and passive management. So like as I mentioned, we will have approximately 70% going into active funds, 30% into passive funds. Though no doubt, as I mentioned, currently, till the time these limits issue is there, we will be putting entire amount into the 2 passive funds. But this I'm saying on an ongoing basis structurally. And within that, we wanted to have a good mix between large, mid and small as well. So approximately 70% is going to be large cap and the balance will be into mid cap and small cap as well. ये होने के बाद में what we have done is that across these our entire strategies, like we have got these 6 funds, तो हमने उस 6 funds का portfolio को पूरा consolidate करके we are maintaining as if we have one portfolio of about 230-50 stocks.
and tracking how they are doing, how their performance is happening, etc. But as I said, within that, the weightage is we are leaving it to each of those underlying funds how they are doing it. So this weightage of each fund, that the 15, 20, 15% allocation which we just discussed in the previous slide, that will be maintained at the start. Then we'll let it drift however it is moving, and then at the end of each year when the annual review happens, we will again bring them back to those levels. So for example, some particular fund which was at the starting point hypothetically 15%, that has grown and become, let's say for example 18%, and correspondingly some which was let's say 20% has become now let's say 17. तो उसका थोड़ा अपन बेच लेंगे और इसको थोड़ा खरीद लेंगे, ऐसा करके एक इनडायरेक्ट वे में डिसिप्लिन मेंटेन भी रहेगा, उसमें प्रॉफिट बुक हो जाएगा, इसमें थोड़ा ऐड हो जाएगा. That way we will be doing a rebalancing. Right. So one final question from my side. So in the US, as per my understanding, there is a lot of migration that is happening from active funds to passive funds, right? But the allocation that you have picked is opposite, that you are picking more of active over passive. So is it because of tech part of it that you are taking this philosophy? Yes, that's right. See, two points. One is that yes, you are right. In many parts of the world, including like in some way US, UK, India, passive funds are becoming larger component. But still, as a part of the total block of funds, active is much more larger. So just I'll just put exact numbers. बहुत जन को ये पता नहीं रहता, तो just I will highlight this number. Today in India, entire mutual fund industry, right? Broadly we know about 38-39 lakh crore is the entire mutual fund industry. From that, about 4 lakh crores is now the passive funds, means ETF and index funds, approximately 10 to 11%. World over, Akshatji, when we see entire professionally managed assets, means mutual fund, PMS, etc. put together, which will include our India's is 40 lakh crore, US ka, Japan ka, all put together is about $105 trillion US. From that, ETFs and index funds is about 10 trillion. 9.7 trillion, 10 trillion, means approximately 10% globally also. But still large percent, 90% is still remaining into actively managed funds also. Mind you, no doubt incrementally money is coming faster into passive, so that growth is looking very high, but still large component is into active. And what we felt is that in this kind of innovation, disruptors, etc., some level of active engagement, active management also could be adding good value. So though one of the main argument globally for active versus passive is कि passive fund में कम cost लगता है, market cap is determining that. Yes, no doubt, we appreciate that and we respect that and we incorporate that into our portfolio construction. So we will have a good level allocation on a steady state basis, ongoing as per the original design. 30% will be in the passive. And which was, as I said, right now because of till the time this temporary limit of SEBI is hit, entire money will be going into those two ETFs only. Understood. All right. Wonderful. So I think all my doubts are clear, right? So I think these would be some of the major questions that came into my mind. So I asked it. But yeah, very interesting. Great. Thanks, Akshat. Really nice. Yeah. I'm happy that we have very relevant questions coming in that actually, I think some of the questions were asked in the comment section as well. And I was going to cover it. And I'm really happy that you did that for me. And I don't have to do it all over again. So thank you very much for this. And with this, I just wanted to say that, we have come together on this platform to provide different opinions of different things that are happening in the market and all of that. As a retail investor, you have to go back, talk to your investment advisor or somebody who you trust and do some reading, do your research by yourself as well. And then make an informed decision. The idea is not to come to platforms like these and just blindly listen and follow and make an investment decision. The idea is to get inspired, know what are the different facets, different angles of looking at things, and make an informed opinion through it. And this is what we're trying to do at Paytm Money Talks. And we would encourage everyone to ask us more questions so that we can look at different, more holistically at different opportunities that come out there and be in a position to offer you certain value that actually helps you in the long term. So with that, I would really like to close the session of today and thank everyone who's been a part of the show. We have
Anil, who generally doesn't, it's the first time that we've come, collaborated with Anil. Akshat, it's the second time that Akshat's come on board. But we're really looking forward if we could get both of you again on this platform and do such a session one more time. So thank you very much, guys. Sure, It thank was you. really a Thank you. pleasure talking to you. And before I sign off, I would really recommend people to type in your comments, maybe like, subscribe, so that you get to know about all the other things that we're going to launch on our YouTube channel, so that you're aware about any other thing that come across and make the most of it. So thank you very much. With that, I would bring an end to this show and wish you all the best in your investment journey. Thank you. Muzammil signing off with Paytm Money Talks. Take care. Thank you very much, Muzammil. Cheers. Bye-bye. Cheers. Bye-bye.